चालू नहीं किए ना, म्यूट रखो ना अभी, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ ना। हाँ वॉच शुरू करायला हरकत नाही. A very good afternoon to all the members and all those who are available online. A very good afternoon. Today is our fourth study group meeting, and today RCM Sanjay is also available. Ramesh Prabhu sir is also available. So I would like, sir, you just give just start up. So it is honor and pleasure for me to attend such a study group of intelligent people, intelligent professionals. And we always narrate that RERA is the upcoming area, and now it is proved that RERA is upcoming area. At the same time, we should understand RERA is not an easy practice. Most complicated practice, I would say, because in direct tax, indirect tax, we learned everything in the articleship. We learned everything while we studied the CA course. So far as RERA is concerned, RERA is different act, recently enacted, and now we come to know what are the practical issues involved in it. In my opinion, sir is there. He is always a mentor and guide for us. And before sir you came, I gave my honest feeling here that Mitali is young chartered accountant. You are the senior most chartered accountant here and the most experienced person in RERA. And still to learn something is coming. So that kind of hunger to learn our fraternity. That is why CP is active. Everything is there. So appreciation for you, sir. I come to the RERA. In my opinion, RERA is very complex matter. Learning is very much needed. And keeping this in mind, we started the RERA group. Actually, sir, previous term maybe आपने handle किया था. So that legacy is now carried over, and members like Sashank and Kunal, Mamta, and Mitali taking over. So we think that the profession is in good hand. Young members are coming forward, sharing their views in front of seniors, and that kind of bonding and teamwork is there. So I wish you all the best. There are around 12 study groups in our IRC. We are increasing them. There are valuation group, data group. I think IBC is also there. Direct tax group is there. Indirect tax group is there. So wherever you need it, you come forward. You suggest us because you people are extended arms of the institute, and this institute is by people, for people, from people. So it is actually understand it is for people, members. So after जो भी feedbacks आएंगे, we are ready to deal with it and we'll come forward with the options. Now Shashank was asking me that कैसे हो सकता है. Kunal also was talking to me if you want to have a memorandum to be prepared to the authorities. RRs is to be taken for the networking and creating bonding with the professionals. Everything is possible. You people plan it, bring it to our notice. Within framework of law, within framework of the rules, regulation, definitely will contribute to it. And जितना भी profession के लिए साथ में लाने के लिए और knowledge enrichment के लिए जरूरी है, everything will be done. So as a regional council member and representative of the council here, I assure you everything. So happy learning to all of you. And let the show begin. Thank you. Ramesh Prabhu sir. So few words from your side. Just. Sanjay Nikamji, RCM course, today's speaker, Mitali, Shashank Jain, and Deputy Convener, Kunal. Thank you very much for inviting me and of course, sharing, talking good thing about me. Thank you. So today we had a very good meeting with the chairman and the RCM regional council members. So we are planning to have a representation to the authority
and lot of discussion has happened, which of course our convener will discuss in course of the day. But certainly one of the things that we are looking at is to have interaction with the department officers, authorities, and they are also very cooperative. They will also come forward. In days to come, some sessions will also arrange with the authorities. With that, uh, small update, I think over to you and take it forward and introduce the speaker. Thank Go ahead. Thank you. Thank you, sir. So, yes. So today's speaker is Mitali Garg. She is practicing in RERA from last 2.5 years, and she is looking after registration, compliances, extension, correction, deregistration. So her core practice is only MahaRERA, and she's doing only RERA practice majority. So 95% you can say. So without taking much of time, we'll start the presentation. And today's topic is QPR, that is Quarterly Progress Report, withdrawal update on the new portal. And as you know, 20th is the due date for QPR. So we have lots of issues in that with the mark-ready, how to go about it with the QPR in the new website. If our application is stuck in the previous website, what to do, how to go about it. So she will discuss everything in detail, and we will have question and answer session once the QPR is done. And then the second part, withdrawal update, will be done. We'll have questions and answer on that. So over to you, Mithali. Thank you so much, sir. Thank you everyone for giving me this opportunity to speak. Okay, go ahead. Okay. Possible, I'll stay here, and because I have to conclude one more. No, please continue. Thank you, sir. Thank you. So, as you know, QPR का season चल रहा है अभी. QPR करना है अपने को, but still there are very much issues we are all facing. So I will try to solve as much as possible from my side what I have learned by doing this QPR. So before starting this lecture, I would like to say कि we will look पहले हम ओल्ड पोर्टल पे कैसे करते थे QPR, so that it will be easy कि हम differentiate कर पाए कि हम पहले कैसे करते थे और अभी न्यू पोर्टल में कैसे करने वाले. Okay. Good. So first I will start with building details. So building details में पहले 4 sections होते थे. एक configuration का, second carpet area का, then कितने number of flats है and कितने हमने allot करे या booked करे, any either of the case. So उसके against में हम ऐसे डाल देते थे. Then नेक्स्ट भी इसमें सबसे बड़ी बात कि पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था, हम जब चाहे तब चेंज कर सकते थे. इट इज नॉट फ्रीज्ड एट ऑल, बट नाउ इट इज फ्रीज्ड. हमको फ्लैट वाइज डिटेल्स पहले डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बट अब हमको फ्लैट वाइज डिटेल्स डालने की जरूरत है. So earlier it used to be a number. Yes. Now number of flats. 80 flats, 30 flats, 40 flats, and uska area. Now each flat wise we have to give the details. Yes, okay. Flat wise. Next, common areas, facilities and task activities. As we all know, this part comes from the form 1. हम पहले form 1 मंगवाते थे, then form 1 से यहाँ पे percentage डालते थे. And this part is divided into 2 sections. One is parking details and second one is common areas. Parking details में कितना propose था, कितना propose कर रहे हैं हम, फिर उसके अगेंस्ट कितना allot कर रहे हैं, units allot कर रहे हैं. This is also not freezed at all. पहले ये freeze नहीं था, हम जब चाहे तब change कर सकते थे, but अभी हम ये it is freezed now. So moving to next, project cost details, and this part comes from the form 3 what we are usually issue. हम जो इशू करते थे उसके अकॉर्डिंग, एंड इसमें भी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता था वो फ्रीज होता था, एज यू ऑल नो, क्योंकि वो एस्टिमेट चेंज करने के लिए हमको करेक्शन में जाना पड़ता था. सेम केस अभी भी वही होता है, इट इज नॉट, बट अर्लियर टेबल ए और टेबल बी ही सिर्फ देना पड़ता था, उसके अलावा कुछ भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं थी. कितना विड्रॉ करा है, कितने नंबर ऑफ फ्लैट से बिल्डिंग, मतलब फ्लैट वाइज डिटेल्स देने की जरूरत नहीं थी हमको. अगेन टेबल ई एफ जी हमको देने की कोई जरूरत नहीं थी, बट नाउ इट इज वेरी मच पर्टिकुलर, हमको पूरा फॉर्म 3 देना पड़ता है. सो आई विल टॉक दिस अबाउट लेटर. नेक्स्ट फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते थे. यूजुअली वी यूज टू अपलोड 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंट्रीज.
Form 1, as you all know, this documents are you all know. मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि सबको सब कुछ पता है. देन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमसे सपोज कोई गलती हो जाती थी बीच में, क्वार्टरली एक बार अपन ने अपलोड कर दिया, फिर हमसे कोई गलती हो जाती, सपोज प्रमोटर का साइन लेना भूल गए, फॉर एन एग्जांपल हम प्रमोटर का साइन लेना भूल गए, तो वी कैन अगेन अपलोड द फॉर्म आफ्टर टेकिंग द साइन ऑफ प्रमोटर. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. कोई पर्टिकुलर टैब भी नहीं था तब कि इस क्वार्टर के लिए ये पर्टिकुलर टैब है, ये पर्टिकुलर टैब है, इसी में डालना जरूरी है. हम डाल सकते थे पहले, बट अब वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. So quarter wise tab there, eh? Yeah, Now, yes, now in the new, there is a quarter quarter wise. by step. So this all, ये old portal का एक छोटा सा introduction था. So I will give come to now new portal and I will give live example so that it would be easy कि हम अब कैसे quarterly करेंगे. शेयर करना पड़ेगा लगता है. Just handling 2-3 responsibilities at a time, no? Okay, thank you. Start. So before moving ahead, QPR करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि QPR करने के लिए माइग्रेशन करना जरूरी नहीं है. माइग्रेशन नहीं करा तो भी हम QPR कर सकते हैं. दिस इज द ट्रिकी पॉइंट. सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर स्टक कि पहले माइग्रेट नहीं हुआ तो QPR कैसे करे, QPR कैसे करे. माइग्रेट करने में टाइम लगता है बिकॉज बिल्डिंग डिटेल्स वगैरह सब डालनी पड़ती है. सो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम और काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि QPR करने के लिए माइग्रेट करना जरूरी नहीं है. आप टाइम पे माइग्रेट आप QPR कर लीजिए. आई थिंक सो आई विल शो कि QPR कैसे करना है. हियर ऑल्सो देर आर 2 पार्ट्स. QPR अगर आपने माइग्रेट नहीं करा है तो QPR कैसे करेंगे, अगर हमने माइग्रेट कर लिया है तो QPR कैसे करेंगे. फर्स्ट आई विल गोइंग टू शो यू कि माइग्रेट करा हुआ प्रोजेक्ट है. सो हमने QPR कैसे करा है. सो एज यू ऑल कैन सी दिस स्टेप्स आर ओपन फॉर अस. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऑरेंज कलर का जो है वो एक्टिव है, बट दिस इज एक्चुअली हमने QPR कर लिया इसलिए ग्रीन दिख रहा है. दिस इज सबमिटेड, सो दिस इज शोइंग ग्रीन. अगर हमने टाइम पे QPR नहीं करा तो इनएक्टिव हो जाएगा. दैट विल शो अस ग्रे. नो सॉरी, इनएक्टिव मतलब जो अभी एक्टिव नहीं है, और डिफॉल्ट करा तो रेड दिखेगा. So I will show you कि so again before starting one more important thing, QPR करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है एक्सेप्ट कोई CC आया हो या कोई प्लान आया हो इस क्वार्टर में. अनलेस एंड अनटिल अपन को कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग QPR. प्लीज डू रिमेम्बर. फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 नहीं, QPR करते वक्त ये जरूरी नहीं है. So I will show you how. So there are 5 tabs. Technical documents update. So इस टैब में if anyone has CC, कोई updated CC आया हो, कोई updated plan आया हो, या आपका order 50 change हो रहा हो, तो you have to upload that document here. Otherwise कोई documents upload करने की जरूरत नहीं है. एज इस प्रोजेक्ट में देखिए हमारा एक नया CC आया था तो वी हैव अपलोडेड दिस डॉक्यूमेंट हियर इटसेल्फ. नाउ दिस इज फिजिकल प्रोग्रेस. दिस टैब हमको फॉर्म 1 में से डालना है. सो यू विल नीड द ड्राफ्ट ऑफ फॉर्म 1. डू रिमेम्बर फॉर्म 1 का ड्राफ्ट वी विल नीड इट, बट कहीं अपलोड नहीं करना है. वी हैव टू पंच द फिगर्स ओनली. हियर वी विल पंच द परसेंटेज हियर.
सो पहले ओल्ड पोर्टल में क्या था कि बेसमेंट एंड प्लिंथ साथ में था, इफ यू ऑल रिमेम्बर कि बेसमेंट और प्लिंथ साथ में था। इफ यू हैव पुट बेसमेंट सॉरी प्लिंथ एंड बेसमेंट 100, तो आपका आपका इस प्रोजेक्ट में बेसमेंट नहीं होगा तो भी वो ऑटोमेटिकली इधर 100 ले रहा है। सो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, अगर आप कोई करेक्शन में जा रहे हो तो आप पहले ही चेंज कर सकते हो उसी टाइम, सो दैट इट विल नॉट बी हसल फॉर यू। फ्यूचर में आपको हसल नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। बेसमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आ रहा है। सो दिस इज अ वन एक्स्ट्रा पॉइंट की ध्यान रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पे यूजली 100 आता है लिखा हुआ अगर आपका प्लिंथ है तो। So you have to punch figures from form 1 here only. See, here is you don't have to upload any document again. If I go to next, there is the building details. हाँ हाँ फॉर्म 1 में कौन इशू कर रहा है? हाँ, ऊपर है। नहीं नहीं अगेन QPR में नहीं है वो। QPR में नहीं पूछते, QPR में नहीं है। नहीं है तो ये किधर से है, ये बिल्डिंग का नाम? सर। ये माइग्रेट करा, ये बराबर। बिल्डिंग का नाम अब ऑटोमेटिक आया। यस, सेकेंड थिंग, अगर आपका विंग्स होंगे तो ये विंग्स वाइज डिटेल्स चाहिए। वो फॉर्म वन आपको इशू करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो विंग वाइज पे हैं आपको डिटेल्स। सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज बिल्डिंग डिटेल्स पार्ट। हियर दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी माइग्रेटेड, दैट्स व्हाई यहाँ पे बिल्डिंग डिटेल्स के पूरे डिटेल्स आ रही है। प्लीज रिमेम्बर, अगर आपने माइग्रेट नहीं करा होगा तो ये डिटेल्स नहीं आएगी। आपने माइग्रेट करा है प्रोजेक्ट तो ये टैब शो होगा, जो कि आपने जैसा जैसा माइग्रेट करा है उसके अकॉर्डिंगली शो होगा। नंबर ऑफ सैंक्शन फ्लोर्स वगैरह जो आपने माइग्रेशन के टाइम डाला है वही शो होगा। हियर यू कैन अपडेट दिस व्हेन यू गो टू व्यू बटन। Because we have migrated this project, we have changed accordingly. You can change if you have done like 102 is you are sold now. In this quarter, you have sold 102. So you can change here unit, you can change sold. Again, you have to put unit consideration, कितने में sold करा आपने, कितना amount आया. You have to fill details accordingly and there will become an update button. So you have to update that button. माइग्रेशन नहीं हो रहेगा वहाँ पे? नहीं, माइग्रेशन हो गया है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो आपका माइग्रेट हो गया है? मेरा हो गया वो है नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने QPR भी फाइल कर कर दिए। हाँ फाइल कर माय दिया ना प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी QPR डन। अगर QPR नहीं करा होगा तो आपको तो वो अपडेट। आपको ऑप्शन दिखेगा, वो लास्ट का कॉर्नर अपडेट का ऑप्शन। वन मोर ट्रिकी के बाद वो बाजू में रहेगा। वन मोर ट्रिकी पॉइंट हियर इज दैट कि सपोज 102 103 104 इज योर सोल्ड यूनिट और आपने पहले अनसोल्ड था, अभी सोल्ड 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 कर दिया, बट आपने सब साथ में कर दिया और बट एक वन एट अ टाइम ही अपडेट होगा। तो आपने वो पहले सोल्ड कर दिया होगा नीचे, तो वो वापस अनसोल्ड दिखेगा। एक पूरा टैब क्लियर करो, उसको सेव करो, फिर नीचे लाइन आइटम में जाओ। एग्जैक्टली आप पहले सोचोगे सबको पहले मैं सोल्ड कर दूं, उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स भर दूं, फिर अपडेट कर दूं, तो वो नहीं होगा। आपका एक टाइम वन लाइन ही अपडेट होगी। कोई एक्सेल इंपोर्ट करने का प्रोविजन नहीं है। एक है बट वो ट्राई करना है, वो ऊपर एक एक्सपोर्ट टू एक्सेल दिखा रहा तो है, एक्सेल ही है, बट इंपोर्ट करने के लिए वापस ऑप्शन नहीं है। कि नहीं? मतलब ये डेटा वेरीफाई करने के लिए है आपके पास, फीड करने का योर टीम कैन वेरीफाई। टेक्निकल में जाके फिर से इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ट्राई किया? नॉट येट। हेवी बिल्डिंग का डेटा तो टेक्निकल में जाके, जैसा हम लोग ने फर्स्ट टाइम माइग्रेशन में जो किया था वो ट्राई किया है क्या टेक्निकल में? नहीं, अभी नहीं है उसका। एवरी टाइम भी समझो इंपोर्ट करते हैं तो इट शुड अपडेटेड ऑटोमेटिकली ideally. For that we need to try it out. So because what happens is like let's say there are let's say 600 sites, okay, so the whole idea will be कि मेरा लास्ट टाइम का जो एक्सेल था उसमें से वो सब में पैसा भी आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा तो एवरी प्रोविजन करना वो एवरीवन एग्री करते हैं, there has to be something It is very hassle. तो it will be मतलब आते से यही करते बैठे सर तो वही हो रहा है कि जो डिस्कशन हो रहा है ना, कि लोग अभी बोल रहे कि एक और टीम रखनी पड़ेगी जो जूनियर से भी ये करते रहेगा बड़े प्रोजेक्ट्स में। अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है मार्केटी से भी। ट्राई किया बिकॉज़ व्हाट आई वाज नहीं, इधर जब बटन ही नहीं है तो ट्राई क्या करें? नहीं, दूसरे टेक्निकल टैब उधर बोल रहे हैं, बिल्डिंग डिटेल्स में। मेन प्रोजेक्ट में टेक्निकल टैब में जाके उधर नहीं है उधर ऑप्शन।
नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा तो रहेगा, इसमें यूपीआई में मैंने नहीं डाला रहेगा। है यूपीआई में, टेक्निकल में भी नहीं है, मैंने आपने अभी बोला मैंने डायरेक्टली नहीं, वो टेक्निकल में वो जो बोले ना वापस है नया फाइल इंपोर्ट कर लो, तो वो ऑप्शन बंद हो गया है। मतलब वन टाइम इंपोर्ट करने के बाद ऑप्शन बंद हो बंद हो गया। प्रोजेक्ट माइग्रेशन के टाइम था तो वो। फिर एडिशन करेगा तो कैसा करेंगे? जैसे कि मेरा अभी आज के टाइम में सेक्शन 10 फ्लोर है, मेरा बिल्डिंग 40 फ्लोर का था, फिर मेरे को और 20 फ्लोर का सेक्शन आया, वो करेक्शन में जाना है ना, करेक्शन में जाके करना हाँ है। करेक्शन में yes, नहीं है बोल yes, करेक्शन yes. में जाके She's नहीं है। telling the right thing. नहीं अपडेट नहीं होगा यहाँ से। चलो अभी वो सब इश्यूज है जो माँ क्रिटी के साथ जो डिस्कशन पॉइंट्स है। अब करेक्शन में जाएंगे तो कंसेंट है, हाँ कंसेंट आता है लास्ट में। अब वो जो उनका फॉर्मेट है उसके अंदर वो कंसेंट आता है। अब वो And इफ one एंड बट है वो अभी एज ऑफ नाउ। किसके लिए कंसेंट चाहिए? अब जो उनका जब करेक्शन में जा रहे हैं ना हाँ करेक्शन। टेक्निकल टैब्स में और उधर हाँ। तो उधर नीचे वो कंसेंट का ऑटो टैब आ रहा है। अब वहां पे आपको डालो नहीं डालो, यू पुट एन एक्सप्लेनेटरी नोट, जब हम करेंगे तो पता चलेगा। मतलब the way because the saying if you have the 500 units तो फिर आपका 20 तारीख तक QPR कंप्लीट ही नहीं होगा। it तो is मैं कह रहा हूँ, impossible. अगर हर चीज का भी ये भी 232 है, ओके 233 रोज है इसका, तो 233 रोज के अंदर अगर सबका अगर वो उसको चेंज करके नया नंबर डालना पड़ेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा? Sir, and it is very difficult. I will show you one thing more. कि यहाँ पे सर ये रोज भी कुछ गलत कैप्चर हो रहा है कि 12 माले की बिल्डिंग है खाली। अच्छा हाँ 60 ही रहना चाहिए। अच्छा 200 से चालू है क्या? ओके इसका आंसर नहीं है। sir, if you have to change 802 suppose, so you have to drag all ये the किधर से है? ये रो नंबर किधर से है? ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो ना, वही देखा मैंने, फिर वो आया किधर से? ऑटोमेटिक? automatic. अच्छा, वी डोंट नो। वो भी एक सर क्वेश्चन वो एक्चुअली वो कुछ लिखा नहीं है सीरियल नंबर या कुछ, वो ऐसे ही है। इधर फ्लोर के बाजू में वो हैशटैग है। नहीं हैशटैग मतलब सीरियल नंबर नहीं वो है। हैशटैग है, हैशटैग मतलब इट इज ऑटो जनरेटेड, बट ऑटो जनरेशन कैसा हो रहा है वो देखना पड़ेगा। मतलब इज इट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑटो जनरेशन और इज इट फ्रॉम द रैंडम ओनली रैंडम दे रहा है? बट वो सीरियल नंबर है फिर अगेन वो सीरियल 200 201 202 हाँ सीरियल ही है। फ्लैट नंबर है। फ्लैट नंबर तो फर्स्ट तो 200 फर्स्ट चालू है। हाँ हाँ वो बोल रहा हूँ मैं, वो सीरियल नंबर है ना, वो फ्लैट नंबर नहीं है। कौन सा सीरियल नंबर है? हैशटैग वाला ही हैशटैग वाला 200 और उसके बाद पूरा लाइन में ही है लाइन पूरा। में ही है, तो स्टार्ट विद 200। Yes. Then next, parking details. One more thing I would like to show you that कि यहाँ पे जो भी आपने डाला है ना, तो summary of building details, please check these details twice. क्योंकि एक बार submit हो गया तो it will be difficult for you to change anything. एक बार या please check करिए एक बार डालने के बाद। और one minute, यहाँ पे the system is not allowed to change, and if because of the system this has happened, wrong things, then you can approach the RERA and they will solve the issue, that technical department, without going to correction option. Because last week I went there. few things they are doing, few things you have to follow up, then it will get an end result. Tell them that this is because of your mistake. जैसे parking में किया था। Correctly. So you have to understand, we cannot go to correction option and we cannot pay the 6,200 or 200, whatever. Because it वही is your इसका fault. भी अगर 10 का 20 करने करेगा करेक्शन थोड़ी है, मेरे तो लिखा ही है ना कि भाई मेरा टोटल पोटेंशियल बिल्टअप एरिया इतना ही है, सिर्फ मेरा सैंक्शन पार्ट बाय पार्ट आ रहा है एंड आई कैन डिस्क्लोज ओनली व्हाट इज सैंक्शन, तो करेक्शन किधर है वो? And in this also serial number also, or while doing this, if we have, I mean, what madam is saying, according to that, we can have a screen recording and can send this to the department or the technical team, so that they can change this also, serial number and all the small things, whatever required, without going to correction. Perfect. So moving to next, there is a parking details. So this will also come from the migration only. Migration में जो भी हमने करा है उसके accordingly reflect होगा. But one more tricky point is here that कि old portal में जैसे here we have taken 33. They used to take 33 units. कितने parking units है? So we used to there it only captures that only. फोर व्हीलर का है, 2 व्हीलर्स का है, there is no clarity. So
here we have to upload कि allot कितना करा है, कितना 33 के अगेंस्ट में कितना allot करा है, but we don't have an option कि वो टैब ही हमारे लिए ओपन नहीं है. You will have to raise a ticket. We have raised, but उन्होंने withdrawal पार्ट में कर दिया, QPR में नहीं करा. So here is withdrawal details, current QPR. So this is like कि withdrawal update में जो भी हमने QPR withdrawal update में जो भी form 1, form 2, form 3 डाला था वो इधर reflect हो रहा है. अभी ये what is the date of? डाला रहता तो नहीं आता तो. नहीं आता. तो it is okay. Yes, Yeah. you can submit. ये फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 पहले विड्रॉल अपडेट में जाके डालना है. ये इस केस में डाला हुआ था, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है 14 जून को. क्या डेट क्या है? 14 जून है ना? Yes. Earlier we have updated. Yeah. कहाँ जूने में किया था? नहीं न्यू New पोर्टल में। में पहले विड्रॉल में अपडेट करा तो इट इज रिफ्लेक्टिंग हियर आल्सो. तो अभी 30 जून का अभी डालेंगे तो नहीं रिफ्लेक्ट हो आपने रहा है. वीडियो में जो अपडेट किया वो कौन से डेट का अपडेट किया? 31 मार्च का. यस यस ये 31 मार्च का नहीं, जून का ही करा है. नहीं ये 31 मार्च का है. 14 जून को और 30 जून का तो नहीं कर सॉरी सकते ना. सॉरी माय मिस्टेक. The beach. या 31 मार्च का. 31 मार्च. और ये 30 जून का कर रहे एक तो reflect लिटिल नहीं हो जस्ट रहा है. चेक ओवर दैट. ये आई थिंक करेक्शन नहीं, उसके ऊपर का जो QPR ओपन था, हाँ. submitted QPR of 24, 25 fourth quarter. If you will go in the QPR na, so we have submitted here also. So ये capture उसने किया है. ओके, ये लास्ट क्वार्टर का कैप्चर करके दिखाया है आपने. हाँ. अब ये हर प्रोजेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर एक प्रोजेक्ट में एक अलग अंडरस्टैंडिंग आ रही है. Today को मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे में नहीं. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक प्रोजेक्ट में अलग अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अलग पॉइंट ऑफ टाइम में. अगर मैंने लास्ट वीक में कुछ और किया है, इस बीच में अगर कुछ चेंज हो गया महाकृति में और मैं ये वीक में कर रहा हूँ मंडे को या सैटरडे को, तो उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं. I think we should represent, at least they should extend that date for this quarter, I think, because there are lots of issues are there. In that there is a small update. I think Mithali will give that update. show you that. So Mithali, just हाँ. now we have covered a project which was migrated. Yeah. Now I will show you project which is not Just- migrated. Yeah. Yes. This last tab you've gone Yeah. Sure. Sir. that we had. So now what we have to do here? Submit. Yeah. Okay. So you have to do you have to submit this. There is a final submit button here. So but this form 1, form 2, form 3, these are coming is of March quarter only. One second. Yes, Why because it we is have that- uploaded. Why it is that you have to confirm that or after that withdrawal, okay, what's coming there? There is no further withdrawal, you have done it during that quarter. But you have done it during the quarter. Then you have the to- withdrawal, Withdrawal. put it And then drag it here. and then submit it. Yes. Okay, fine. Fine. If we have withdrawn, what is to be done? See, this was up to last withdrawal, Correct. right? After that, if I would have withdrawn, then I would have to go to the withdrawal update. Where is that withdrawal update? Oh, Yeah, I will show you, sir. where is the withdrawal Yes, update? sir. Yes. अच्छा. ये withdrawal update में जाके उधर जाके form 1, form 2, form 3 Yeah. डालना पड़ेगा. Here. Okay, that is to be updated, uploaded or filled? Filled and We have uploaded. to fill. Then there will be a download of the system form. It has to be signed. It has to be first taken onto the letterhead of the respective professionals, then signed it, then again do a PDF and then upload. Got it? मतलब in short, काम बड़ा है. we have become label. That's it. Upload का बटन है ना इधर? Yes. All the professionals, all the professionals. We prepare forms for all the professionals first. Yes. Depends upon what letter of engagement you have taken. I cannot comment on it. Till now. No, but that means like, if you have taken the responsibility of RERA updation, then we need to take a first draft certificates from architect engineers. Then we need to fit the data. But And then resend them. thing is that for this updation, we need to raise our fees. A lot is fine. एकदम What सर about, सर एकदम मुद्दे का now बात let किया. us come, say quarterly, Now, last, again, just one question. Last 6 quarters, I have not withdrawn any money, nothing. So still I have to quarterly take the certificate from chartered accountant and upload? Should I do that? Not No, required. no, not required. If you have not withdrawn, then not. Not required. But somebody was telling me even if the figure of the last quarter of the form number 3 is same like current quarters,
Same, no withdrawal last 2 quarters. Till they say you have to, You need to quarterly update need to be there, no? quarterly update has to be done, but certificate. Sir, sir, See, even there was an Circular. here also. In case there is a no withdrawal during the quarter, then a self-declaration was from the promoter stating that there is no withdrawal is enough and you don't have to give a form 3 for it. That was the thing. But there was another school of thought which was saying that the one of the responsibility of a promoter is to ensure that the project updates होना चाहिए. तो project updates professionally कौन दे? आप कह रहे हो ये तो प्रमोटर ने डिक्लेयर किया है कि इसका नो विड्रॉवल है, इसका काउंटर अप्रूवल कौन दे? So that is a second school of thought. So whether it is clashing with that promoter's responsibility, what he has given, it's a question mark. But from here, RERA says that if promoter is self-declaring that I have not done, and even if it has lied, let's say, but RERA will go on to face value of the problem. Now tell me, if I'm able to upload, na, I can upload. I can Any number of forms withdrawal, yeah, I can. 1, Yeah, 2, you 3, can every time I can go on updating. There is no limit. So as you said, QPR does not require update, this one, but Yes. here, Withdrawal part will require form 1, form 2, form 3. and as you do, you go on uploading. Yes. And even in QPR also, let's say what is the last withdrawal update? After that, if you have taken any withdrawal, then first you have to update that. Then you have to, do the things. पर वो last मुझे वही मतलब every time withdrawal करते हैं तो ये process करना है. मतलब every time you have issued from what you need to update it. Every time करना है. लेकिन अगर QPR के टाइम पे आया, तो वो लास्ट QPR अभी के बीच में withdrawal किया है, तो आप उधर डाल दो. ये जो withdrawal हम लोग एक लिमिट देते हैं ना, सपोज एक है तो इतना 100 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं बराबर. हाँ तो उसकी लिमिट में किया विड्रॉ, उसके 100 रुपए में किया, फिर भी मुझे फॉर्म डालना. वो लेके जाना, वो क्या लिखा था उसको लेके जाओ. हाँ सर. Jenny. Just read that QPR. हाँ सर, sure. See, I hereby confirm that no further withdrawal update has been filed for the current quarter other than the ones mentioned above. withdrawal update मतलब लिमिट नहीं होगा. Yes. So as on 31st March, my withdrawal limit was 5 crore. Till 30th June, I have exhausted 3 crore only. So 2 crore is my withdrawal. So you don't need to file form 3. So you can file a QPR और फिर आगे client को बाद में हाँ. But in that case, revenue कैसे? Yeah. But after updating this, if we have issued new form 3 for this June quarter, then we need to again go in withdrawal update and we need to upload that form. Yes. Okay. So this QPR we need not file quarterly if we are not exhausted the. Sir, QPR has to be filed quarterly. You have to file quarterly. But you not required to upload the forms. फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 की जरूरत नहीं है, अपलोड करने की जरूरत नहीं है. उनका क्वेश्चन ये है कि एग्जॉस्ट नहीं हुआ सर. हाँ या सेम थिंग. लास्ट में देते हैं कि वो अपना फॉर्म 3 का टॉपिक कवर हो जाए. Sure. Madam. I will show. Sir, this is the. Yes, I have one question. Yes. See, withdrawal update needs to be done before the QPR, right? Yes, correct. Withdrawal has to be updated before withdrawal. For migration, yes. For migration just, not for QPR. Understood. So I'm we right. have done the migration. Now, when we have to comply with the QPR part for the month of June, we have to first update with form 1, form 2, form 3. And after that, we have to go for the QPR update. I would like to add on this. Can you log in other one which is not migrated? Sure. I will show you one of my project which is not migrated. So it will bring some more clarity. Just a minute. Yeah, this is the project. This is not migrated. So here. I'm doing QPR. When I go to QPR, if I'm doing
Q1 of 25-26, if I go to that, then you have to upload all the form 1, form 2, form 3 and disclosure of sold unsold inventories. You can see the difference. One which we were doing was a migrated project. This is not migrated, and these new options are showing that you can upload form 1, form 2, form 3 and sold and unsold inventory. But this form 1, form 2, form 3 जो हम लोग पहले जैसे बना के साइन करते थे वैसे ही अपलोड करना है। अभी ये जो अपडेट आया है ना, ये रिसेंट एक 2-3 दिन में आया हुआ है। विड्रॉल में कुछ दिखेगा नहीं। मतलब in this case which is not migrated, तो हम लोग जो पहले जैसे बनाते वही साइन करके अपलोड करना है। That is what our understanding is. सर अगर माइग्रेशन नहीं हुआ है तो QPR अपडेट करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब पर विड्रॉल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। Yes. As you can see, withdrawal update is blank. Okay. Where withdrawal update is, Withdrawal update is blank. So you did not migrate. Yeah, this project is not migrated. So मतलब if project is migrated, तो उसमें अगर first we need to go in withdrawal update and upload form 1 to form 2, 3, then we need to go, then we. Not also necessary. अगर आपने withdraw नहीं करा है, then you can. If withdrawal is there, they are issuing the certificate. Yeah. Then we need to go first. Migrate. Withdrawal part. Yeah. Okay. Then afterwards we need to go to QPR. QPR. Okay. I think we can take a break for 5 minutes. You can also have a snack. I hope this is clear for you. Madam, one more question. Yeah, Just sure. One last question. Yes. See, if my withdrawal limit is not exhausted based on the previous form 3, so जैसा शशांक जी ने बोला कि 5 करोड़ का withdrawal limit था previous form 3 में, अभी 3 करोड़ रुपए withdraw किया है, 2 करोड़ रुपए की limit अभी भी है, तो मुझे form 1, form 2 दोनों भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, right? Because all the 3 forms are linked. Yes. Yes. Perfect. Thank you. So without migration, we will be able to do the QPR. And while doing that, you will have to update project QPR करते टाइम वो project में वो डालना पड़ेगा आपको, है ना? What, sir? That form 1, 2, 3 डालना. Yeah. You have to upload form 1, form 2, form 3 disclosure of sold unsold inventory here. Then only they will allow the further update. Yes. फाइल नहीं किया वैसे Yeah. QPR फाइल नहीं किया और माइग्रेट भी किया माइग्रेट भी करा और QP फाइल नहीं करा है, यही तो है मतलब माइग्रेट नहीं। आई गॉट योर पॉइंट, वो भी मैं बताती हूँ। और यहाँ पे ये बता रहे सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्डर, ये क्या है? अगर आपका विड्रॉल कुछ हुआ है, वो ऑर्डर कौन सा है, वो ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है ना जो 2023 का कुछ था, वो अगर ऑर्डर 2023 का था। हाँ 2021 का था, इनफैक्ट ऑर्डर 2021 के अंदर आया था। वो ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जहाँ पे अगर तुम्हारा ये नहीं रहेगा और इफ यू गो टू दैट ऑर्डर, फॉर्म 1 फॉर्म 2 तो कंपलसरी है, उसमें भी फॉर्म 1 फॉर्म 2 तो कंपलसरी है, फॉर्म 3 कंपलसरी नहीं है, provided there is a self declaration that there is no withdrawal. In other words, if there is a withdrawal, even form 3 becomes compulsory as per that order. correct. Now if going through this logic, तो आपने जैसा बोला 5 करोड़ का 3 करोड़ रह गया, 2 करोड़ बाकी है, अगर वो ऑर्डर के हिसाब से देखने के लिए जाएगा तो आपको फॉर्म 3 भरना था, लेकिन अगर ये लॉजिक के हिसाब से देखने जाए तो शायद नहीं भरना है, मेरे हिसाब से भरना पड़े, बिकॉज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी आ जाता है अपडेट का, राइट? लेकिन सेक्शन 11 का रिस्पांसिबिलिटी कैन बी अवॉइडेड बाय दिस। अभी इन लोग ने 2 पार्ट कर दिया, एक QPR वाला जो पार्ट किया है, वो फंडामेंटल पार्ट और भी उसमें क्यों और माय व्यू गेट स्ट्रेंथन इज दैट व्हेन इट इज नॉट माइग्रेटेड देन दे आर कंपल्सन फॉर QPR. So had that been the intention, it would have been compulsory. ये ऑप्शन अभी आने लगा सर, ये ऑप्शन है ना, एक 2-3 दिन में आया। अभी इसके पहले जब हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल QPR ही दिखा रहा था। यस, अभी ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, दे हैव टेकन एन इंटरनल डिसीजन फॉर दिस। लेकिन उसके अंदर वो तो देखेगा कि ये सब 4 चीज है कंपलसरी है। फॉर्म नंबर 1, 2, 3 कंपल्सरी। सो अभी मेरी जो ड्यू डेट है सर, सोल्ड एब्सोल्यूट इज कंपल्सरी, मेरी जो 20 तारीख की ड्यू डेट है, QPR से लिंक्ड है। आज मेरे को QPR फाइल करना है और उसमें फाइल दिखा रहा है QPR, जबकि विड्रॉल का डेटा है उसमें। हाँ बराबर है, और वही विड्रॉल का डेटा रहेगा, दैट वुड हैव बीन पिक्ड इट फॉर फॉर्म 1 डेटा,
बराबर वो 30 तारीख का डेटा रहता है, as per your district that was let's say whatever 15 June or whatever, and that 15 June का तेरा अपडेट was of 31st March. So basically उसमें वो भी नहीं है कि कौन सा पीरियड के लिए वो अपडेट है. तो अभी जो मैं आज अभी अपलोड करूंगा अप्रैल टू जून, वो भी मेरा जुलाई में ही अपलोड होगा, बिटवीन 1st to 20th जुलाई. तो वो कैप्चर कैसे करेगा? अगर वो मैं जब Q1 फाइल करने जाऊंगा तो उसमें वो डेट कैसे पकड़ेगा, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क पे. वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी आपका भी ये पता है, परसेंटेज पता है जो आपको आया, that percentage would have come from form 1. Yes. जो क्वार्टरली अपडेट में आपने डाला रहेगा, और कोई जैसे तो आया नहीं रहेगा, और वो तो क्वार्टरली अपडेट है मार्च का. और उसमें भी मार्च में भी आपका समझो सेल यूनिट का डिटेल, कलेक्शन डिटेल वुड बी डिफरेंट, और आपने अभी जो QPR में जो फिगर डाला दैट वुड बी डिफरेंट. Yes. It will not match with the QT to form 3 which is now picking in this your final table. 14 जून में जो आया था. So But अभी so it is advisable that first you go in withdrawal update, upload form 1, 2, 3. Even if you go in withdrawal update also, my question is that 30 जून से तो पहला नहीं जा सकते हैं. 100%. नहीं तो भी 12:01 को जा सकते हैं ना. But sir, Earliest तो. but sir, we have done withdrawal update for this quarter. Then वो reflect भी नहीं हो रहा है quarter में. That is the which we are वही तो मैं कहना चाहता हूँ Reflect भी नहीं कि हो रहा अपने है. को हमको क्वार्टरली अपडेट करना है. हाँ. ऐसे क्वार्टरली अपडेट कहा गया एवरी क्वार्टर एंड में. एवरी क्वार्टर एंड में कहा गया, जैसा कि ये अभी आपका क्वार्टरली अपडेट दिख रहा है उधर. Correct. This quarterly update would have been possibly for the viewers of the this of perfect for the allottees. right? So that viewer को जो क्या दिख रहा है, टेक्निकली क्वार्टरली अपडेट डाला गया है जून में, लेकिन वो अपडेट है मार्च का. और जून का अपडेट जो भी बनेगा वो फर्स्ट 1 तारीख को तो डालेगा ना, उसके पहले तो नहीं डाल सकते. तो 1 तारीख तो जुलाई में आएगा. नहीं सर, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, जो QPR है ना अप्रैल टू जून का, उसमें जो डेटा डाला है कि मेरा कितना काम हुआ, वो अप्रैल टू जून का है. जो वो ऑटो सिलेक्ट कर रहा है 14 जून वाले जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहा है, वो 31 मार्च के. सो पंच किया है. हाँ, QPR में जो डेटा मेरा काम हुआ है ना, फॉर्म प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस जो है, एक सेकंड, शी विल टेक यू टू दैट टैब. सो दिस वी हैव टू पंच. ऑटो नहीं, नीचे वाला जाओ, क्वार्टर 1 में जाइए, इसमें जाइए फिजिकल प्रोग्रेस. इसमें सर डेटा हमने पंच किया हुआ है. दिस इज नॉट ऑटो पॉपुलेटेड. सो दिस इज एज ऑफ 30th जून. इसके बाजू वाला भी जो टैब से बिल्डिंग मैंने कितना माल बेचा, क्या बेचा, वो भी 30th जून का है. पार्किंग भी 30th जून का है. बट जो ऑटो सिलेक्ट फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 जो दिखा रहा है ना उधर, वो 31 मार्च का है. बिकॉज वो जब माइग्रेट हुआ तो हमने प्रीवियस क्वार्टर 4, 24, 25 का अपलोड किए थे, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 ऑन 14 जून. वो कैप्चर कर रहा है. जो हमने जुलाई में अपलोड किए विड्रॉल अपडेट में, वो कैप्चर नहीं किया. नहीं, वो फॉर्म भले पिकअप नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग ने फॉर्म 1, 2, 3 में जाके डेटा अपडेट किया है तो ऑटोमेटिकली इट शुड पिक अप फ्रॉम देयर ना, आइडियली. नहीं हुआ एग्जैक्टली. मैं वही बोल रहा हूँ. आपने विड्रॉल अपडेट में जाके फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 विड्रॉल जनरेट किया, वहां से जनरेट किया, चेंज किया, साइन किया, सब किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं, वो हुआ था. वो इसमें हुआ था ना, नहीं हुआ. अब वो मैं बोल रहा हूँ ना कि आज किया और 4 दिन बाद आप कर रहे हो, तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो डूइंग बैक एंड चेंजेस हो रहे हैं. I think strongly we should represent कि this way we can't work. नहीं, अभी इसलिए एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू हैव नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसकी डेटा बहुत ज्यादा है, अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ, तो अभी हम टेम्पररी उस पे QPR फाइल कर रहे हैं. फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 जैसे जूना बनाते थे वैसे ही बना के एक बार अपलोड कर रहे हैं फॉर QPR. उधर आपको इनपुट करके डाउनलोड करके साइन करके करने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट स्कैन अब उसका एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है, बट यहाँ पे अगर वो टैब मेरे को ऑप्शन दे रहा है तो हम वो कर रहे हैं. आप अच्छा ऐसे ही स्कैन. हाँ, क्योंकि माइग्रेशन की कोई डेडलाइन नहीं डिसाइड हुई है. QPR की मेरी डेडलाइन है, ड्यू डेट है. दैट्स द रीजन. TCS कर रहे हैं क्या? नहीं, ये PWC है. क्यों आपको TCS से थोड़ा तकलीफ है? TCS तो फटाफट करता है, अच्छा करता है. इन्फोसिस गड़बड़ है. मतलब इसका मतलब ऐसे हो गया, माइग्रेट नहीं किया है उसका, अभी भी हम लोग फॉर्म 3 करंट डेट में इशू कर सकते हैं. ऐसा हो गया ना. फॉर्म 1, 2, 3
फुल ऑन सोल इन्वेंटरी मैनुअली बना के अपलोड कर सकते हैं और वो इशू भी कर सकते हैं बैंक को। यस सब जगह पे सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो यही है। ये अब समझो PwC कर रहा है, जो आदमी कर रहा होगा ना वो खुद आज तक एक भी फॉर्म 3 बनाया नहीं है। बस बस बट दैट इज द बिगेस्ट Perfect. प्रॉब्लम। इंजीनियर कर रहा होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समथिंग लाइक। और जो ऑफिसर है जिसको पता है वो उसके साथ 1-to-1 बैठ के उतना टाइम नहीं दिया। ऑफिसर को भी, जिसको भी नॉलेज है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये प्रैक्टिकल चीज में वो लोग इतना जाते ही नहीं है। जब तक जो प्रैक्टिकली कोई सीए जो ऑन फील्ड पे जो काम करे वो साथ में नहीं बैठेगा ना, तब तक ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है। चलो आगे, हाँ ये आगे लेते। So moving next, next I would like to highlight कि profile update करना mandatory है. If you didn't have updated profile update, you cannot do QPR. So profile update करना जरूरी है, but migrate करना जरूरी नहीं है for QPR. Please remember this thing. प्रोफाइल किसका? For प्रमोटर का। promoter का. बेसिक डिटेल्स मांग रहा Basic होगा। details मांगेंगे. So you have to update this. नाश्ता कर लो 2 मिनट। 2 मिनट ठंडा हो जाएगा, ब्रेक ले लो। नहीं, तब तक दूसरा कुछ डिस्कस करना है तो करो। हाँ आप कर सकते, आप बोल सकते हो। कुणाल भाई आप भी बोल सकते हो। नहीं, we are discussing about the RERA on QPR. नहीं, but RERA भी, Yeah, you are facing any challenges in QPR? So let her finish, then yeah, Bhavesh ji, if you want to say something. फॉर्म 2 का प्रॉब्लम हो रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आई हैड रेज्ड अ टिकट क्वेरी, स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग। मतलब वो टिकट रेज करना है, जो भी क्वेरीज आ रहे हैं वो सब टिकट रेज करना है। टिकट रेज करो और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिखो। हाँ, क्योंकि अच्छा, वो मोबाइल नंबर लिखने से सामने आ जाता है कॉल आता है। अच्छा, 100% आता है। हाँ, कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं वो लोग? कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं वो लोग? they are doing within maybe 24 to 48 hours. प्रमोटर्स Yes. नंबर और नहीं मैं इसलिए बोला ना, when you raise a ticket ना, you have to write your email, मोबाइल नंबर। and this mobile number specifically, तो वही मोबाइल नंबर पे कॉल आता है। नाम लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मोबाइल Just नंबर। mobile, that's it. और वो टिकट वहाँ कंप्लेन टैब से रेज करना है। हेल्प डेस्क में, यस। Help desk This का- I will show you. help desk का वो करेगा। कहाँ से करना है? Help desk का नहीं है ना। Help desk, टिकट से my- My tickets, टिकट create ticket. एंड अटैचमेंट कंपलसरी है इसमें। अटैचमेंट तो अटैचमेंट आप कुछ ना कुछ करो, स्क्रीनशॉट लेके अटैचमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Now one query is that March 24th, this 25th certificates are uploaded on old portal, but by mistake data was not updated. अभी after migration, ना रहा है। now data is picking up of the December. Question to him. Let her finish. तो आप माइग्रेट में कर लो पहले। वो दिसंबर के साथ माइग्रेट कर लिया, अभी मार्च का सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड करके छोड़ दिया। यस ओके, और बनता है तो withdrawal में जाके वो बना लेना, withdrawal में तो change फिर मार्च का फिर से बना के, लेकिन उसमें फिर अपलोड में जाके सर मार्च जो पुराना वाला सर्टिफिकेट से अपलोड कर, withdrawal में फिगर डाल दे, इनकट का, which is in sync with March. और सिमिलरली विड्रॉल के अंदर, विड्रॉल में जाने से पहला अपना जो ये रहेगा, क्या बोलेगा, तेरा इन्वेंटरी का रिसिप्ट का फिगर, वो 31 मार्च के साथ सिंक कर दे, तो वो क्या प्रॉब्लम? Done, done. उसके बाद जूम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत बार हो गया कि सर्टिफिकेट अपलोड हो गया लेकिन डेटा अपडेट सिस्टम में डेटा पेपर जो इसके लिए BC विराट ने कभी लेक्चर नहीं दिया ना। हाँ, लेक्चर देने वाले को भूख नहीं लगता। मुझे बस हो गया। अपडेट करो मैडम। ना कुछ नहीं डालना, आपको नया ही एक वाला अपडेट करो। लेटेस्ट रहेगा, जैसे स्कूल आपने अपडेट नहीं किया तो उसको भी ये करो। Okay, go ahead. Just want to add, if any of your colleague or a new chartered accountant want to start practice in RERA and he is confused, we have a session tomorrow at here only in Bhagavad series. Dilip Agarwal sir is taking session how to start RERA practice or how he started. He will share, so you can tell your colleague or who is into finalizing. Online also available, but physically here. अच्छा, in the same. Okay. Not same room. हाँ, मतलब in BKC. In ICI. Very good. On RERA only. RERA. Now let's talk about withdrawal update. So we will go to withdrawal update.
Here also we can see there are 5 tabs: building details, parking details, form 1, form 2 and form 3. So building details, if you have updated in withdrawal update, it will not be updated in QPR. You have to update there also. Let me inform you. If you have updated form 1 here, you can't update. It is not automatically updated in QPR. You have to update yourself. So it is also hustle. अपडेट में जाओ हाँ, पूरा दिखा रहा है या पूरा 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 सेम सेम same? सेम सी इधर अपडेट दिखा रहा है बिकॉज क्यू विड्रॉल अपडेट वी कैन डू so there is no restriction. So this tab is open for me. So what I'm showing ki if I have to update this to 302, then I have to go down, then I have to drag, then I don't know where is 302. I don't know. This is gone. Then I have to go up, then I have to count the numbers कि कहाँ पे था for 302. Then accordingly I have to do. मतलब फिर से वापस एक्सेल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है. सही है, स्ट्रांगली And this is this point should be really और जहाँ पे इन्वेंटरीज बढ़ी है वो डिफिकल्ट होने वाला है. और टाइम भावेश सर इस पे वो विड्रॉ जो है अपडेट क्या कर रहा है, जो पैसा आया वो correct sir. जो unsold sold price when amount issued है. फिर और कुछ गायब हो जाता है. This figure is coming. no this is not, it is an unsold. This is Sold है तो sold है तो if this is like this is sold. So आपको डेट डालना है. इट भी मैन्युअली नहीं Then I डालना. don't know where it is gone sir. I have to drag this drag and I have to go upside. It's very hustle for us. ये एक्सपोर्ट होता है एक्सेल में भरने के बाद पूरा. एक्सपोर्ट तो होता है ऊपर एक्सपोर्ट होता होगा. नहीं होगा. इसमें नहीं हो रहा है इसमें नहीं है इसमें नहीं है. विड्रॉल अपडेट में नहीं है विड्रॉल अपडेट में नहीं है. QPR में था वो. QPR में है. तो ये टैब जरा लंबा है, इसके लिए वो If I do short ना sir, if I minus, then also this is the problem. इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. नहीं नहीं नहीं. सब है. Yes yes yes. The same. वो बोला वो इधर से चला जाता है. चला जाता है. Then we don't know कि कौन सा कहाँ गया वो. And one more thing. तो ये आप जाके दिखाना चाहिए. हाँ प्रैक्टिकली भाई स्क्रीन में जाके. सर आप बताइए अभी कैसे हम लोग करें इसमें. Yes. हाँ उसी के लिए आप लास्ट में इनको भी बता दो. जरा जल्दी करो. मंडे ट्यूसडे रहते हैं इधर किसी में चेयरमैन चेयर साहब. में, या आपको टेक्निकल जाना है ना. टेक्निकल लेकिन क्या है, ये सब जो चीज है ये हम लोग एक ही पॉइंट को अगर दिखाएंगे, जैसा QPR के जो 4-5 पॉइंट है ठीक है. QPR को एक कर ले रहे या ठीक क्योंकि अभी इतना तकलीफ हो रहा है तो एक हफ्ता और तकलीफ होएगा तो फर्क नहीं गिरने वाला. ठीक है, लेकिन इट विल बी प्रॉपर थिंग. नहीं तो क्या होता है हर पॉइंट के लिए आगे, हर पॉइंट के लिए आगे वैसा नहीं होता है. ठीक है. ठीक. And what I suggest, we can have a screen recording and then we can send. So it will better also. So ना इधर ये चलो ये तो छोटा है ना. अभी एक काम करते हैं, जिसका 400 वाला है ना उसका स्क्रीन निकालते हैं, बोलेगा कि अभी इसमें कैसा निकालेगा कि मेरे को ये चेंज करने का है. 400 में से 200 बिका है, 200 का मेरे को चेंज करने का. जब मैं चेंज करने के लिए उधर फिगर कितने ले जाएगा तो मुझे पता नहीं कि फ्लैट नंबर का किधर किधर पर यहाँ पे अदरवाइज ये एडवाइजेबल है कि माइग्रेट मत करो, सिर्फ QPR कर दो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो. ये माइग्रेट नहीं करेंगे तो फिर बाकी का करेक्शन वो सब कैसा करेंगे. करेक्शन एक्सटेंशन वो सब अटकेगा. मतलब आज जिसका जरूरत एक हफ्ता खींच लोगे, 10 दिन खींच लोगे, फिर यू आर इन द सेम बोट. And one more thing, when we do fill this data in Excel, remember जब हम book डालते हैं तब date नहीं मांगता है, but if we change here booked तो वो date मांगता है. इसमें बुक करेगा तो डेट Date मांगेगा. I will show you. I will show you. परफेक्ट. This is if I बुक में तो ये बोल रहे हैं Yes. इंपोर्ट किया तो नहीं मांगता. Excel import कराना. नहीं, टेक्निकली मांगना भी नहीं चाहिए क्योंकि Exactly बुक the करके लेके बिफोर रजिस्ट्रेशन वाला चीज है वो. Yes. वो ना मांगने So की चाहिए वो बोल रही है एक्सेल से जब हम इंपोर्ट करते तो नहीं आ रहा है. मतलब यही गलत है ना. हाँ सर. मतलब यही गलत है जिसके ऊपर हम लोग Coding. डेटा अपडेट करने वाले वही प्लेटफॉर्म गलत है. वो रॉ ही नहीं आना चाहिए. डेट का रॉ कॉलम ही नहीं आना चाहिए. RERA के एक्टिव में डेफिनेशन क्या है? क्या what does book नहीं है. There is no definition like book. अलॉटमेंट डेट से ही चालू होता है. So either they have to specify the allotment date. Booking का मतलब क्या होता है?
They will change it ना book के allotted date करेंगे. Understanding of book is that before registration and after allotment, okay, or when the person has, means being verbally or otherwise, this is accepted. This flat is supposed to be. EOI लेते 50,000 1 लाख रुपया, वो भी मतलब will it be considered as EOI का अलग बात है नहीं. EOI get culminated when the allotment happens. Till that time, it's an expression of interest. It may be either accepted or rejected. So only once allotment is done, then So that's what allotment is. What is being presumed as a book. Okay, that's a presumption of a book, not yet registered. So during that phase, तो allot हो गया ना वो flat उसके लिए. तो book रहे तो date मांग रहा है. Book रहेगा तो date तो डाई नहीं सकते ना, because ऊपर date लिखा है वो register का date. Registration date लिखा है. Registration तो हुआ ही नहीं है. उसका registration तो जैसा registration होगा तो उसको sold में अपना sold में चले जाएगा. So that book first is book, then sold. That's how it's the chronology. Without migration, certificates can be uploaded. Yes. Only profile. Withdrawal update is not possible, but you can upload the certificate. सबका certificate अभी भी roll back कराओगे. RERA के regulations के हिसाब से progress report has to be करना है. submitted. नहीं अच्छा. So at least from that angle we हो जाएगी resolve. 20 तारीख तक तो आप safe हो थोड़ा. better will. नहीं. So moving ahead, this is parking details, same as QPR. Here you can see, as we have raised the ticket, here they have done this total number of parking 4-wheelers, 33. As we raise the ticket, they have done this. QPR में नहीं करके दिया उन्होंने. So we can do either update. We have selected the project now. Here you can only update the allotted part. Just remember, कितना allot करा है वही अपन update कर सकते हैं. Otherwise we can't update here. और next thing is that कि total number of parking is 4-wheeler is 33. That's why I can update here 14. Otherwise I wouldn't have been. So if my parking changes with the sanction plan, then I have to go into correction. Correction. Yes. वही तो चीज है वो वो इंटरलिंक कर रहा हूँ मैं फ्लोर से और सैंक्शन फ्लोर से. तो वो गलत बात है ना. Normally understanding was that earlier when they want the details of parking, so we used to put only 4-wheeler parking. Correct. If in my building say project, I have 4-wheeler parking of 50 and 2-wheeler parking of 100. So now I need to go to correction, then Yes. Yes. ऐसा वो बोलना चाह रहे. 2-wheeler इसमें बस का भी है अलग से नहीं है ना. बस का भी है. अलग से बस का भी है. बस का भी है. विजिटर पार्किंग है. तो टेम्पो का नहीं है. तो सोचा था चॉपर का भी है क्या. आगे की सोच Sir, करके वो 2-wheeler, 4-wheeler. But sir, जब हमने टिकट रेस करा ना तभी तो 33 है. Otherwise अगर ये splitted होता, तो it is not showing anything. रेसिडेंशियल उसमें आना ही नहीं चाहिए ना. बस और वो सब आ सकते हैं. आ सकते हैं. रेसिडेंशियल में भी अपडेट करने देना. मान लो मेरा बड़ा गोडाउन है रेसिडेंशियल. Open space also. शोरूम है. हाँ. तो मेरा लोडिंग अपलोडिंग का टेम्पो रहता है. बस But still बस there is कोई zero. ट्रैवलिंग एजेंसी रहेगा. बिकॉज वो 0 है इसके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है. तो टेम्पो तो नहीं है, खाली बस है. बेसिकली ओपन भी अलॉटेड में नहीं आ गया रहा. ऐसे ओपन या स्लैश करके कर दो ऐसे. बहुत सारा अलग अलग Exactly. ऑप्शन रहने में कोई दिक्कत नहीं. Parking, see, we are just focusing on the residential. Yes, residential, non-residential, both. हाँ बराबर है. कमर्शियल ऑल्सो. He got it. Moving ahead, now form 1. So basically सबको पता है अभी से यही सबको है. We have to get a draft from the promoter, form 1, form 2, form 3 का. Then you have to upload that data in these tabs. Then you have to save this form 1. Then download this form 1, which is system generated. Then you have to again send to professionals, promoter, and they will send to professional. Then they again will send promoter, then they will send to us, and then we can upload this form 1. And again go up. अपलोड का किधर है बटन. Download, then you have to upload form 1 here. Yes.
In this also, that yes, no, basement, yes, what is podium, yes, this is auto-populated from the previous migration wala. So in this project, there is no basement, there is no podium. Still it is yes. Okay. So all this will go in correction then. And again, in earlier form 1, if you see the architect used to send a form 1, then in case of stilt floors, he used to write के भाई ये अभी 12 माले का सैंक्शन है, 8 माले का काम हुआ है, तो मैंने वो हिसाब से रेशियो दिया है. He used to mention that. Few architects used to mention that. Now there is no remarks column where you will mention कि आज मेरा प्रोजेक्ट है 12 माले का है, मेरा सैंक्शन 10 माला हुआ है, उस सैंक्शन के हिसाब से मैं परसेंटेज निकाल के दे रहा हूँ. कोई आर्किटेक्ट वो स्टाइल में चलते, तो देयर इज नो ऑप्शन टू पुट अ रिमार्क हियर. In earlier form 1, we used to change that in a Word file. So how to go about it? So we had that situation recently. So we told the architect कि आप उधर नीचे हाथ से लिख दो और वो फॉर्म हमें भेज दो, हम वो अपलोड करेंगे. Either you can put note in one another letterhead. That page can be attached as a fourth, as the next last page in the PDF and can be uploaded. One more So in that case, that is increasing our work. Architect is also on another line. So it should have a remarks column, sir. First thing to means this is not in line with what the form has been prescribed as per regulation. As per regulation, basically. Basically, it should flow from the regulation. So that's it. So, sir, what my suggestion was कि जैसे in form 3 we have a remarks column. down. At least the form 1 should have that remarks column. Form 1 and form 2. So whatever remark as a professional wants to put, he can put there, and that form would be generated. इसमें तो था ना आर्किटेक्ट का रिमार्क था ना राइट हैंड साइड पे रिमार्क डालते थे ना इसमें है क्या नहीं वो टेबल बी में है सर. टेबल बी में है. टेबल ए में नहीं है टेबल ए में नहीं है. Now second form 2, similarly, we have to get draft from the promoter. Similarly, we have to get draft from the promoter, then we have to fill this data, then we have to save form 2 here. Here is remark column. So table C is like a remark, extra additional points or delete any you can do that. यहाँ पे ये अपलोड करने के लिए नहीं दे रहा है. देखो जैसे फॉर्म 1 अपलोड करने दे रहा है ना. Yeah. पीछे जाओ, बैक करो, बैक कर लो. हाँ फॉर्म 1 में जा रहे हैं. फॉर्म 1 तो ओके वो डायरेक्टली बाहर देखो यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अपलोड करना है. अपलोड का डाउनलोड फॉर्म 1 करने के लिए. फॉर्म 2 को अपलोड करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है. यस बट वो फॉर्म 2 तो क्वार्टरली अपडेटेड है ना. नहीं बट अभी जैसे फॉर्म 1 आप लोगे तो फॉर्म 2 भी लोगे और फॉर्म 3 भी लोगे. विड्रॉल अपडेट इफ आई सिलेक्ट दिस. हाँ सिलेक्ट कर. डाउनलोड करने दे रहा है, अपलोड करने नहीं दे रहा है. हाँ बट ये अपलोड हो चुका है. 30 जून का अपलोड हुआ है ना. ये हुआ है. उधर ये हो चुका है अपलोडेड. But withdrawal update में sir we can do as many times as we want ना. ये अपलोड हो चुका है इसके लिए वो. No but but आना ही चाहिए ना. आना चाहिए ना. withdrawal update we are doing withdrawal. ये फ्रेश नहीं जाता. नहीं सर. मूवमेंट ऊपर चेंज करूंगा तभी होगा. सेव करते तो लाइव में गई है. आया अभी आया. समझा तू ओके और तेरा उसके अंदर अभी कब से विड्रॉल आ गया. ओके अभी इनका तो चेंज नहीं है ना ये प्रोजेक्ट में. अभी करेक्शन में जाना पड़ेगा. 10,000 रुपए दो. मैं करेक्शन के लिए बैठा हुआ. करेक्शन में कितना चार्ज ले? 6,200. 6,100 और कुछ चिल्लर है. 6,200 राउंड फिगर. एक बार एक ही करेक्शन करें. एक मल्टीपल यू कैन डू. मतलब एक बार पैसा भरने का मल्टीपल. नहीं एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो. फिर वो मल्टीपल क्वेरीज निकालते हैं, फिर हम रिप्लाई देते हैं, वो क्वेरी निकालते हैं, वो खेलते रहने का. अपना फीस क्या होता है? उसमें डाल सकते हैं. अब वो सब क्वेश्चन मार्क है. 10 times. गवर्नमेंट का फीस का 10 times is our fees. That's a good formula, Mithal. Now moving ahead, form 3. Because that learning is very important ना. ये तो हो जाएगा. सर फीस के लिए ना बाद में डिस्कस करते हैं. से वो बंद करना पड़ेगा. So form 3, next moving ahead. This is also like we need some draft. We have to upload the same. Earlier, remember table A or table B we used to fill. Now we have to fill all the things as per form 3, and here for table C will automatically get populated from building details.
So you have to fill all the details here. Then you have to save form 3. Then download, same thing. Then upload and like same thing. There is nothing. लेकिन इसके अंदर हम लोग खुद अपना खुद का फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। यूटिलिटीज हाँ सर, वो नहीं पूछता है ना। नहीं, वापस बोलो। अपना खुद का ओरिजिनल फॉर्म भी जो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी क्या हो रहा है, व्हेन यू विल गो इन करेक्शन, व्हेन यू गो इन एक्सटेंशन, जब वो स्क्रूटिनी करेगा तब वो क्वेरी निकालेगा। ये कहीं आपको मैं बोल रहा हूँ, तो वही है ना, सब As far as it is matching, I should not. queries तो The only thing is this download पे upload कहाँ करना है? वो वहाँ पे है सर। This is सर्टिफिकेट फॉर्म 3 choose like here. Okay. Then you can upload. Then you have to. Better way we should get signed copy, and for the sake of just then we can download. No, it. in meeting they have specifically told कि system generated ही चाहिए. Specifically. And when they will get time, they are going to scrutinize that also. जहाँ पर माइग्रेशन नहीं हुआ है वहाँ we have to upload our own form 3 and like that. Unless अगर migrate नहीं हुआ है तो ये withdrawal update वैसे भी आप नहीं कर सकते हो। तो there is no question of uploading your form 3. लेकिन इसका मेजर पर्पस क्या है? ये अलग से मतलब उनके फॉर्मेट को लेके अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो डाउनलोड करते हो ना, एक दो में ऐसा हुआ है कि उसका जो पीडीएफ आता है वो आर्किटेक्चर तो मैं लेटेड के साथ सेट ही नहीं हो रहा है। हाँ, फिर बिल्डिंग वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और इश्यूज हो रहे हैं। बस देखो कितना अच्छा इजी सॉल्यूशन। उधर से भी क्वेरी आता है कि लेटर एंड क्वेरी है। सर वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेरी आता है। विदाउट लेटर अलाउड नहीं है। नीचे नोट लिखना पड़ेगा। आपके फॉर्मेट में जगह नहीं है। ये वाला पार्ट माइग्रेशन। और इसमें रिमार्क्स भी जो है, जैसे हम और हर क्वेरी पे फीस चार्ज करो, अच्छा है ना? आपका लॉयर के जैसा। वही तो बोल जज बेटा के देख लेगा। आज में प्लीज अपलोड दो फाइल अपलोड हो सकता है? No. Is it possible? No. नहीं होगा? No. Otherwise, we should give a suggestion. Take a professional signed copy. ये डाउनलोड करके प्रमोटर का साइन करके अपलोड करें। प्रोफेशनल दो बार तो बट वो फिर अपने लिए भी सर वो डिफिकल्ट होगा और उनका भी उतना डेटा बढ़ेगा। Yes. उनकी जो सिस्टम में है भाई साहब स्क्रूटिनाइज करना। आप अकेले क्या प्रोजेक्ट का देख रहे हो? हाँ. दे हैव गॉट 20,000 प्रोजेक्ट। यदि 40,000 पीडीएफ अपलोड होता है तो नहीं, लेकिन एक चीज क्लाउड कितना प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग बनाते हैं फॉर्म 3, राइट? और फिर वो फॉर्म 3 सिस्टम में लेट्स से क्लाइंट अपडेट करके फिर हमको भेजा, तो टाइम फॉर वापस यस and then again downloading, again taking the printout on your letter and again doing the PDF activities and then uploading, and then client doing it and then again doing the client also doing the same PDF activity and uploading. इसको कितना टाइम लगता है? कुछ वर्क के कुछ मैकेनिज्म ये नो आप गुजरात रेरा जैसा कुछ सजेशन दे सकते डीएस डिजिटल सिग्नेचर वेयर डिजिटल सिग्नेचर से होगा एंड एवरी सर्विस प्रोवाइडर लाइक आर्किटेक्ट इंजीनियर they can go for a digital signature, promoter can go for can be done from form 1 form 2 form 3. I think that if they can, but that is the perfect way to do it actually. that there was some little ego clash हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ। गुजरात रेरा अच्छा कर रहा है, नहीं हम उनको कॉपी नहीं करेंगे। तो हम why should we do the way Gujarat has done? We will go with our own unique way करके वो there was some clash. नहीं बट दिस इज अ फैक्ट ना, उसमें क्या है, आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड होने दो ना, बिकॉज़ वी हैव टू बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट गुड थिंग्स एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट चेयरमैन, इट हैपेंड ड्यूरिंग द अर्लियर चेयरमैन। एनीहाउ लेट अस गो अहेड। They may seen as in competition. No, not competition. When we said that Gujarat RERA has the login detail for chartered accountant, architect, engineer, promoter, or stakeholder, the data gets captured. It's a good way of looking also good. Everything is good. No, we will go with our own way. I think go with their own way. अभी कितना complication होता है? Once you come to practically, one understand ना. And today we are talking about digital era. If it is a digital era, let it be digitally signed ना. There is a token. Today digital agreements are getting signed across the globe. ये सिर्फ पोर्टल डिजिटल है, बाकी इसमें कुछ भी डिजिटल नहीं है। Exactly. We सब मैनुअल डाल दिया है। It is more time consuming Yes. than compared to the manual one.
There is more time. More time, 100%, sir. पर बिल्डिंग डिटेल्स इज सो हसल, सो मतलब वो करते गोल गोल रहो। घूमते रहते हैं। हाँ सर और अब बात हो रहा the best part is even the building वहाँ से details download issue, करने का it is not getting auto fetch for form 2 or for form 3 or for QPR. For everywhere we have to ऑटो update it. फैच होना चाहिए, मतलब उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो उधर का डिफरेंस आया, इधर से डिफरेंस आएगा, अगेन क्लैश है। तो उधर का डिफरेंस आया, मेरा फॉर्म 3 इधर का अपडेट नहीं करेगा। अभी आप सोचिए कि अगर कोई बड़ा रहेगा, बड़ा इसका रहेगा, अगर उसको फॉर्म 3 बनाने का रहेगा तो उधर सीए बोल देगा, मैं रिमार्क में लिख देता हूँ कि टेबल सी टेबल डी इज नॉट इन लाइन विद व्हाटएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट आता है, फॉर दैट सेपरेट अदर सेक्शन के नाम पे डाल दिए, वो वैसे ही बताना पड़ेगा, बिकॉज जो हिसाब से हम लोग देखा अपडेट करने का है तो पता चलेगा कि 20वां फ्लोर का अपडेट कर रहा है कि 19वां फ्लोर का करता है कि 25वां फ्लोर का करता है। एग्जैक्टली सर, वो पता ही जब तक नहीं चलेगा तो फिर अपडेट करने के लिए भी डर लगेगा। 100%। और वो डेटा एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है कि एक्सेल में आ जाए और मैं क्रॉस वेरीफाई कर दूं, वर्स्ट कम सिनेरियो वो भी नहीं है। and after 400 you have to type कितने सोल्ड हुआ, you have to manually count 1 2 3 कितने सोल्ड, I don't know that. Migration के लिए वो ड्रॉप डाउन का जो एक्सेल का यूटिलिटी होता है ना, अब वैसा भी अभी तो we are talking of only one building. Let's say the one project has registered projects have 10 buildings. With one project. Okay. Now building 3 पे 305 नंबर का फ्लैट के ऊपर इतना पैसा आया तो कैसा ढूंढेगा भाई? अभी 142 एकड़ अडानी साहब ने उधर लिया है और 600 एकड़ धारावी में है, तो कितना बिल्डिंग होगा? तो ही इज थिंकिंग फॉर अ बिगर मैन, व्हाट डिफिकल्ट इज बिगर मैन का अभी का ही बात करो, ईडब्ल्यूएस का अपना दोस्त का है, दो ही रजिस्ट्रेशन, बिकॉज इट हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम सीएसएमसी के 10 बिल्डिंग का एक रजिस्ट्रेशन करेगा, 10 बिल्डिंग का एक था रजिस्ट्रेशन किया है, 7 माले का बिल्डिंग है, 28 और 35 व्हाटएवर, ओके राइट, वो फ्लैट है एक बिल्डिंग का, तो एक रजिस्ट्रेशन में 350 आया, एक विंग के अंदर लेक्स 35 आया। अभी अगर लेक्स के बिल्डिंग नंबर 14 का 403 फ्लैट देखने का, बिल्डिंग नंबर 11 का पैसा आया, सिर्फ 2 जन का ही पैसा है, उसको सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड व्हाट योर कंसर्न, बट वी नीड टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली। अपडेशन के लिए मैकेनिज्म चाहिए, अगर आप वो फेस नहीं करते तो एटलीस्ट वो ड्रॉप डाउन का जो एक्सेल का अपना रहता है नॉर्मल फिल्टर वाला, वो तो वो उसमें से चूज कर सके, ढूंढना बोले तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलो गो अहेड। So finally we have to final submit withdrawal, and here I hereby certify that the information provided herein is true and correct. Yes, tick that and withdrawal part is submitted. This is all. So promoter will upload. He will select and he'll upload ना। ये withdrawal part हो गया और एक अपना QPR part, yeah. Very good. And form 3 में जो remarks भी है वो भी uneditable हो जाते हैं। Yes. वन सबमिटेड एंड रीसबमिशन आया, कुछ क्वेरी आया, तो जैसे हमने एक चेंज किया है उसमें कुछ क्वेरी आई तो हमारे रिमार्क्स भी चेंज हो रहे हैं नीचे क्वेरी की वजह से, so we are not able to delete the remarks what we have put earlier, so now we have to give a cross reference कि जो पॉइंट नंबर 5 में हमारी क्वेरी है, रीड ऑन द 8th नंबर पे मैंने डाला कि पॉइंट नंबर 5 हैज टू बी रीड एज सच, so वो मेरे को डिलीट करने भी नहीं दे रहा है। तो विदाउट माइग्रेशन अगर हम अपलोड कर देते हैं तो माइग्रेशन का कोई टाइम लिमिट है नहीं, बट अभी तक नहीं है, बट अगर आपको एक्सटेंशन करना है, करेक्शन करना है, तो माइग्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपका विड्रॉल भी है, मेन तो विड्रॉल है, विड्रॉल तो करना पड़ेगा, करेक्शन सर एक बार बैंक वाला चला देगा कि नहीं? नहीं, वो नार वाला है, पैसा बहुत विड्रॉल चाहिए नहीं, बैंक वाला तो चला लेगा फिजिकल वाला, बैंक वाले इधर तो कब अटकता है जब पैसा अटकता है तब। One more thing, if your project is lapsed, still you can't do withdrawal update. Just remember that also. अच्छा लेफ्ट साइड तो उसको रिवाइव करना पड़ेगा, Yes. तो ना एक्सटेंशन QPR कर सकते हो पर withdrawal update नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपने बराबर है ना, विड्रॉल नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। Yes. दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स एक्सटेंशन? 1 ईयर सर 3 to 6 months। और आपका एक्सपीरियंस? अभी एक रिसेंट एक्सटेंशन किया था बट वो एकदम वैनिला केस था, एकदम सिंपल था, वी अप्लाइड ऑन 4th जुलाई और 10th जुलाई को आ गया, सो 7 days में एकदम सिंपल था, न्यू पोर्टल, वेनिला मतलब क्या था? एकदम सिंपल था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं था, सब 51% साइन था, सब सिंपल था,
तो वो हो गया, क्वेरी आई थी। फीस भरवा लिया, वो बस अभी सिंपल है तो कम ले लेंगे। लेकिन अभी एक्सटेंशन का और लैब्स का भी क्या इशू हो रहा है, लेट्स से कि आपका पास है ना ओल्ड प्रोजेक्ट के अंदर कुछ करेक्शन पेंडिंग था, बाय द टाइम करेक्शन करने के लिए देखते हो करेक्शन क्लियर नहीं किया है, और मेरा इधर प्रोजेक्ट का लास्ट डेट 30 जून का प्रैक्टिकल होता, 30 जून हो गया, मैं ओल्ड पोर्टल से एक्सटेंशन नहीं कर सक रहा हूँ, न्यू पोर्टल से एक्सटेंशन नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि न्यू पोर्टल तो दिख रहा नहीं है प्रोजेक्ट माइग्रेशन के लिए, वहाँ पे करेक्शन पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन नहीं, विड्रॉल ऑप्शन नहीं है सर उस करेक्शन में ना, नहीं ऑप्शन जूनियर पोर्टल पे मेरा जो करेक्शन पेंडिंग है, अब उसमें विड्रॉल ऑप्शन नहीं है ना। विड्रॉल ऑप्शन ये तो मिक्स में है, इट इज पेंडिंग ऑन देयर एंड, अच्छा, आई कैन नॉट इवन विथड्रॉ, so it is pending on the desk. second thing, not all withdrawals, because these are banking related, so these are dangerous, these are linked with your what do you say, loans. नहीं, आई एम टॉकिंग कि वो एप्लीकेशन जो मैंने की है करेक्शन की, वो मैं जूने वेबसाइट से निकाल दूं, फिर नए वेबसाइट पे आने दे रहे क्या? तो ये इशू है ना कि सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, either करेक्शन और एक्सटेंशन। वी आर हैविंग अ सिमिलर केस, एफएसआई बोर्ड जूना कभी का पड़ा है, साल भर हो गया उसको इतने सारी सिग्नेचर से अभी लेने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी उसको छोड़ दिया। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई सेल किया नहीं अभी तक, बट एक्सटेंशन करना है तभी भी वो कंसेंट मेंबर्स का ही नहीं मेंबर्स का नहीं लगेगा, मेंबर्स तो चाहिए ही, they are the promoters. they are the promoters. हमारे 9 हमने सोल्ड करे हैं, बट 2 उसमें से एक ही जने को सोल्ड करा है, तो दे आर शोइंग कि 9 टोटल लिखो और हाँ तुमने 7 का ही कंसेंट लिया है, बट हाँ हमने 100% का लिया ना, भले सेम है हमने तो लिया 100% है ना, 51% से ऊपर था इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज we would have faced that issue also. So that problem, I was just last week I was there in RERA, one person was with the same, बोला मैंने 40 फ्लैट बेचे हैं, उसमें से 20 फ्लैट एक ही आदमी ने लिए हुए हैं, वो एक ही गिनेंगे उसको। हाँ, पर टोटल 40 बोलेंगे, टोटल 40 बोलेंगे, ये एक ही गिनेंगे, तो वो परसेंटेज ही नहीं हुआ है मेरा। वो 40 को भी चेंज करने नहीं दे रहे ना, 40 को 21 करने नहीं दे रहे। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं अभी थर्सडे को गया था रेरा में, तो उन्होंने क्या बोला वहां पे कि आप एक और एक कॉलम इंसर्ट करो और वहां पे लिखो एज पर सेक्शन 14 क्लॉज 2, और अगर सपोज एक ही जन को 20 अलोकेट किया है ना, तो आप टोटल सोल्ड उतना कम कर दो और फिर आप परसेंटेज निकालो, लेकिन वहां पे लिखो एज पर सेक्शन 14(2), तो वो हिसाब से वो आगे मतलब दो लाइंस आ जाएंगे, एक आपका टोटल आएगा जो मैच होगा सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री से, और एक नीचे लाइन आएगी कि एज पर सेक्शन 14(2) टोटल मेरे यूनिट से 100, उसमें से मैंने 20 ही बेचे हैं। यस, तो वो ऑप्शन देता है उसमें ऐड करने का लाइन, वो फॉर्मेट में उन्होंने वैसा बोला है, मतलब वो जो एक्सटेंशन का फॉर्मेट, न्यू पोर्टल एक्सटेंशन का फॉर्मेट, एक्सटेंशन का फॉर्मेट में यू कैन डू दैट। हाँ, एक्सटेंशन के फॉर्मेट में ओके, करना है वैसा। न्यू पोर्टल में कैसे करेंगे? एग्जैक्टली पोर्टल न्यू पोर्टल में परसेंटेज ही वो अलग दिखा है, और बाय डिफॉल्ट पिकअप कर रहा है ना, बाय डिफॉल्ट। सो जूने वेबसाइट में ये ऑप्शन हम कर रहे थे कि वेयर यू यूज्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन लेटर, और वो वहां पे कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सोल्ड जो था वो बाय द अपन वे हाथ से लिख दे सकते आर हैं। एंटरटेनिंग सर उसमें एवरीबॉडी। दो आप लोग जाते हैं तो वाया वाया SRO ही जाते हैं, वी यूजुअली टेक प्रमोटर अलाउ। अच्छा, तो अलाउ करते हैं, हाँ, प्रमोटर आता है तो अलाउ करते हैं, यस, वी ऑलवेज टेक प्रमोटर अलाउ। ओके, अदरवाइज डायरेक्टली जाते हैं तो अलाउ करते हैं, No. देन Generally, unless you fix the meeting, if you fix the meeting then it is done. through whom? SRO. Through SRO, you fix the meeting and you can do it. अच्छा, because he also went to ऐसा रेरा में बोलते हैं ना, यश हाँ हाँ, यस यस। आप अपॉइंटमेंट लेके गए थे या कैसा? नहीं, डायरेक्टली जाते हैं सर, फिर एसआरओ को बोलते कि अरे हम आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए, तो फिर उतना एक हमको लेवरेज मिलके हम हो जाता है सर मीटिंग। अच्छा, तो अपने को फिर आपका इधर अहमदनगर क्या है, औरंगाबाद, छत्रपति, हाँ हाँ, संभाजी नगर में आना पड़ेगा। यस, आप यहाँ पे बोलो ना मैं आउट ऑफ स्टेशन से आया हूँ। चलो
सर हमारे केस में हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है और टॉपिक हो सकते हैं तो कर सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। 30 जून को एक्चुअली प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया था और हमने उसके पहले ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था। अब हमको 7 तारीख के आसपास 7 जुलाई को एक क्वेरी ऐसा आया है कि आप सारे फॉर्म्स अपडेट करो पोर्टल पे, फॉर्म 1, 2, 3, 2A, 5 सारे फॉर्म्स अपडेट करने हैं। अब ये नए वेबसाइट पे किया है सर हमने, तो पुराने वेबसाइट से सारे फॉर्म्स तो एक्चुअली माइग्रेट हो गए थे। तो 31 मार्च तक मेरा पूरा पोर्टल पे अपडेट किया हुआ है और 30 जून के बाद का अब मैं अगर अपडेट करने जा रहा हूँ तो विड्रॉल में मेरे को अपडेशन का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, प्रोजेक्ट लैप्स बता रहा है। तो अभी ऐसे सिनारियो में क्या करना चाहिए सर? In our scenario, they asked to update only QPR, not withdrawal update. In my case, they have asked us to do everything. So we have put a query on the portal, wo help desk pe, stating that we have received this query and we have attached that query screenshot also. And withdrawal वाला screenshot भी attach किया है कि वहाँ पे हम लोग form 1, form 2, form 3 upload नहीं कर पा रहे हैं, but then they have not replied to it. In that case, we are also not able to reply. सर नहीं, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो वहाँ पे हम नंबर ऑफ अटैचमेंट डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ आप वहाँ सर, पे ये एक थर्सडे एक्सप्लेनेटरी को नोट डाल यही के आया था। वापस रीसबमिट करो। Okay. With your form 1, this is an trial and error. वहाँ पे आप डालो विद एन एक्सप्लेनेटरी के भाई ये चीज मेरे को करने नहीं दे रहे और मैं अभी बाय टाइम टेम्पररी फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। वंस द पोर्टल अलाउज मी, आई विल डू द नीडफुल। ठीक, यू कैन ट्राई दिस और सक्सेसफुल हुआ तो बताना। सर ये कर सर ये वाला जो सॉल्यूशन आपने बताया ना शशांक सर, वो थर्सडे को रेरा वालों ने भी वही बोला कि ऐसा करो करके। मतलब देखो कितना टेलीपैथी मैच होता है आपका। नहीं तो किया क्या? मतलब हमने अच्छा कन्वीनर पकड़ा है। सर हमने कर दिया और वो आगे भी बढ़ गया। चलो बढ़िया है, तो हम लोग को भी एक सोल्यूशन मिल गया। हाँ, इवन आपका वैलिडेशन हो गया, आपका बोलते सजेशन हैं का वैलिडेशन हो गया। सर वो लोग और एक चीज बोलते हैं कि फॉर्म भी फ्रेश रिवाइज आप फॉर्म भी वाले टैब में अपलोड करो, तो लेकिन वहां पे ऑप्शन नहीं आता है। तो वो केस में भी हमने ऐसा ही लिखा, वहां पे ही एक्सटेंशन वाले पोर्ट वहां पे ही अपलोड किया और वहां पे लिख दिया नोट कि हम लोग ये बाद में अपलोड करेंगे। फॉर्म भी तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके हाँ, फॉर्म भी अगर अभी जैसे न्यू एक्सटेंशन के लिए फॉर्म भी का बात कर रहे हो ना? राइट। हाँ, तो वो we will have to upload in extension application and afterwards whenever we are able to upload in the new means the before portal form B का जो जगह है अगर वहाँ पे परमिट करेंगे तो afterwards we will upload there. Okay. Or you will have to replace the old one, either of the option. इन्हें ऐड करके आप नया अपलोड कर सकते पूरा रिपोर्ट। हाँ बट अभी वो है ही नहीं। हाँ वो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा टैब भी बंद है। एक्सटेंशन एप्लीकेशन में ही अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भी। So I think if any questions are there left, if you have any questions or discussion. सर का क्वेश्चन था हाँ अपना कि जो विड्रॉल लिमिट है, विड्रॉल लिमिट बराबर ना? विड्रॉल लिमिट नॉट एग्जॉस्टेड। तो डू वी हैव टू फाइल क्यूपीआर? तो वो सर क्यूपीआर फाइल करना है आपको। आपने विड्रॉल किया ना अगर क्वार्टर में तो आपको क्यूपीआर फाइल करना। नहीं किया तो यू कैन पुट अ सेल्फ अंडरटेकिंग कि नो विड्रॉल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर और फॉर्म 1 फॉर्म 2 और एक डिक्लेरेशन आपको खाली वही है। only there is a change, then only we have to file the. If there is a withdrawal. In case of withdrawal, yes. Is it available for public view now? 1, 2, 3. 1, 2 are available. 1, 2 are available. 1, 2, 3 is not available. 3 is not available. 1, 2, 2A, 5. And sold on Sir, one question. In case, as per the development agreement, लैंडलॉर्ड और डेवलपर के बीच में शेयरिंग है नंबर ऑफ फ्लैट्स, और वो पोर्टल पे हमने अपडेट किया है कि दीज फ्लैट्स बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड. नाउ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डेवलपर एंड द लैंडलॉर्ड स्टेटिंग दैट some of these flats will now be sold by the developer only, and developer will share some portion of the revenue of that
those flats with the landlord. तो अब यहाँ पे क्या होगा सर कि जो डेवलप लैंडलॉर्ड के जो फ्लैट्स थे वो डेवलपर की किटी में आ जाएंगे बेसिकली, तो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे सर? भावेश सर विल एक्सप्लेन. पहले उसको इन्वेंटरी चेंज करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन में जाना पड़ेगा, और प्लस इवन बैंक भी चेंज होएगा, बिकॉज उसका वो रेवेन्यू शेयर कर रहा है ना. रेवेन्यू शेयर सबके लिए नहीं कर रहा है, जो उनका पोर्शन था. नहीं उसका पोर्शन का वो भी फ्यू पार्ट. हाँ थोड़ा सा, सब इन्वेंट्री नहीं, 10 में से 4 का ही. हाँ यस. सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पहले बनाना पड़ेगा ना, फिर ही ये सब होगा ना. पहला तो जेडीए के साथ करना पड़ेगा ना सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट. सर सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट बनाया है उन्होंने, which is a notarized agreement actually. As your first agreement is registered, so उसके ही continuity में वो supplementary agreement. वो सब रेरा देखती है ये सब, इतना डिटेल देखते हैं. रेरा नहीं देखती है सर, but we will have to follow the but वो he is asking for RERA, he is asking for shortcut. लैंडलॉर्ड इतना समझता नहीं है कुणाल भाई, लैंडलॉर्ड है ना, इतना समझता नहीं है, तो क्या करने का. फोन पे बात करेंगे. भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, शांति से बताएगा. शॉर्टकट के लिए अलग से कॉल करेंगे. एक वोट ऑफ थैंक्स. वोट ऑफ थैंक्स. वोट ऑफ थैंक्स पहले अपना पॉइंट्स ऑफ डिस्कस. वोट ऑफ थैंक्स के बाद पॉइंट दे दे पहले का. हाँ अपना फर्स्ट नहीं मीटिंग, वो इस वोट ऑफ थैंक्स के बाद वो एजेंडा ले ले. We are really thankful of Mitali. In a very short period of time, she has made such a wonderful presentation and given very insightful information, like whether it was for migrated data, non-migrated data, everything was very minutely explained, and minutely all the queries were resolved. Where there was withdrawal update information we have to put, and about QPR, we are really thankful, and taking us in very few days we have done so much of things in the new website. It's a very challenging thing. We majorly have not gone through all these details also, so we are fortunate today for Mitali to give us time and the knowledge which you have gained. We are really thankful on behalf of study group. I once again congratulate. Thank you. Thank you. And like we have some few updates. Our next study circle meeting will be done after 15th of. I'll just announce the date also. Study group. RERA study group meeting. So the next 3 months meeting, now what we have scheduled, we'll put an email to WRC, and if it is available, we are going to block it. On August, it will be 12th of August, that is Tuesday. September would be 19th of September, and October would be 17th of October. So these due dates we have taken it ke bhai September mein 15 September ke baad we have kept the date. 15 September is last date for income tax. October we have kept before Diwali. So we after considering all these points, these dates we have freezed. After considering the due dates and the festivals. Yes, we have tried that, and we have to do one meeting every month. There are few more updates, like we are coming up with the third edition of RERA book. So we will require volunteers from the RERA study group as well as from the other participants who will give us insights. And sir will lead, Ramesh sir will lead for the same, and will guide us how the book publication part will work. The second announcement is regarding we have taken a permission for doing online query group to be created, where we will get the queries from all over Maharashtra and we will try to resolve it. We require 10 volunteers. We have put 10 volunteers name given to chairman sir, so that there will be a Google link to be provided to all members, and we will be resolving those queries through WIRC. In the session. In the session, not in the session. Like session in the sense in a virtual meet. In a virtual meet. Either virtual meet or by email. No, generally it's virtual meet only, like direct text, indirect text they are doing. Yeah. So virtual meet. So it is virtually, like direct tax and indirect tax committees are working. In the same way, we are proposing for RERA also to be done.
through WIRC. So there a Google link will be provided to the members, and if they have any queries, that queries will be raised, and that queries will be solved by the stalwarts of our study groups as well as the other members who are very stalwart in this particular profession. Very good initiative, Kunal. Thank you. And from this, we have also asked for a residential refresher course. So that also we will announce the dates once we get the approval and the initial talk. Like we will have a 2 days residential refresher course for only for RERA topic, and where we will be discussing more about RERA and how betterly we can invest, like get more insights of how RERA is working. And in the next meeting, before like we are also trying to schedule an Mahakriti training through MahaRERA. We are taking the appointments in the next week so that there will be a joint session by Mahakriti as well as Mahakriti team of MahaRERA. They will be coming to WIRC and giving a virtual go through of the Mahakriti website so that we all, what are technical difficulties we are facing, we can try to resolve them. So this initiative also will be taken like the follow-up, and there will be representations given to MahaRERA, but it will be only regarding how, what are the major impacts. We will be only covering major impacts. We will be not giving them a whole book. जैसे बड़ा booklet बना के दे रहे हैं कि there are 80-100 points. We will be going in there and giving some small insights कि हमको ये पहले चाहिए. Priority wise, we will try to resolve it, and we will try to get more members along with us so that we give them the whole insights of whole Maharashtra. Not we are representing only the Mumbai region. We will try to gather members from all other parts, and we will try to tell them, give them free information that we are gonna meet. So if possible, you also come along. So there will be more people from different parts of Maharashtra and more representations given of every region. So these all things which we have discussed, Ramesh Babu sir also told, yes, we will work again towards this direction also. And all these things were discussed with Chairman sir, Secretary ma'am, and all I have given the permission to go ahead. So that's all. Thank you all members for attending today's meeting. Any new members who have attended online? CA Mahesh, CA Yashnagar, Karan, Maskara, Mahesh Ladda. Okay, I think our session is over. Yes, yes. We can मैडम conclude. बाहर से उसको बोलना और आप भी आना